हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन मैथ सीरीज एकेडमी। तो आज हम लोग स्ट्रीम वैल्यू थ्योरम के बारे में जानेंगे और उसके प्रूफ को भी देखेंगे कि कैसे हम स्ट्रीम वैल्यू थ्योरम को प्रूफ करते हैं और ये थ्योरम क्या स्टेट करती है। लेट अस सी। तो इफ आई एम जस्ट टेकिंग एफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, है ना। हमने एक एफ एक्स जो है एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हमने ले लिया। एंड देन इफ द कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज डिफाइंड इन अ क्लोज इंटरवल, अगर फंक्शन हमारा क्लोज इंटरवल ए कमा बी में कॉन्टिन्यूअस है तो अपने जो लोअर एंड अपर बाउंड्स हैं वो उनको अटेन करेगा। अटेन मीन द लोअर एंड अपर बाउंड विल बी बिलोंग टू रेंज सेट। ओके, तो लेट्स डिफाइन इट, लेट्स स्टेट इट देन प्रूव। ओके, तो इफ यू कैन राइट हियर, if fx if fx is continuous, it's continuous function in the interval a comma b, close interval a comma b, a comma b, okay, and जो and this m and small m अगर हमने लिया है यहाँ पर, और its upper and lower bounds, अपर अपर की जगह पर आप इसको लिख सकते हैं एल यू बी, लीस्ट अपर बाउंड। क्योंकि अपर बाउंड तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो दिस इज लीस्ट अपर बाउंड एंड लोअर, you can say GLB, greatest lower. Okay, the upper and lower bounds, then the function fx takes uh, takes once the value, कम से कम एक बार जो है ये वैल्यू अटेन जरूर है। once the value m and at least once the value is small. Okay, in this interval q comma d, तो यू कैन इसको सिंपली आप ऐसे भी लिख सकते हो। यू कैन राइट लाइक दिस सिंपली, a continuous function attains its bounds. Its bounds. But continuous function should be defined on a closed interval. Okay, तो ये रिजल्ट हमें प्रूव करना है, ठीक है, और देखना है। ठीक है, तो क्या कहता है रिजल्ट कि if a function is continuous in the closed interval a comma b, then it will be attain its bound. Okay, so write the proof of it. So it means, what meaning of attain? It means there exists 2 points x1 and x2 in the open interval a comma b, ठीक, such that this f of x1 is equal to capital M, and this is f of x2 is just equal to small. It meaning of this, it means it will attain its upper and lower bound if the function is continuous in the closed interval a comma b. So let us see कि कैसे हम इसको प्रूव करेंगे, how we will prove. Okay, तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये अपने बाउंड्स को अटेन नहीं करता। मतलब जैसे हमने कैपिटल एम को अगर हम बात करें कैपिटल एम पे या फिर स्मॉल एम पे, तो
पहले हम जो प्रूव करते हैं, दो हमें प्रूव करना पड़ेगा। एक तो आपको कैपिटल एम, मतलब हमें अपर बाउंड को दिखाना पड़ेगा कि वो हमारे पास बिलोंग करेगा रेंज सेट के अंदर, और सिमिलरली हमें लोअर बाउंड को भी दिखाना पड़ेगा। ओके, तो फर्स्ट हम देखते हैं। तो आई एम जस्ट राइटिंग हियर, आई एम जस्ट टेकिंग सपोज कि हमारे पास वो अटेंड नहीं करता। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। सपोज द फंक्शन, suppose the function does not attain, does not attain the value वैल्यू कैपिटल। और क्योंकि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है, इट मींस दिस एम इज ग्रेटर देन ऑल द फंक्शंस वैल्यू, है ना। मतलब दैट इज लीस्ट अपर बाउंड, इट मींस इट अटेन नहीं कर रहा है, इट मींस दिस एफेक्ट इज लेस देन कैपिटल एम बिकॉज कैपिटल इज द अपर बाउंड। ओके, तो क्लियरली यू कैन से कि जो हम एम माइनस एफ एक्स लिखेंगे, ओके, कैपिटल एम में से अगर हम एफ एक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो दिस डज नॉट वेनिश, मतलब ये कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि वो अटेन नहीं कर रहा किसी भी वैल्यू के लिए, किसी भी एक्स के लिए फंक्शन की वैल्यू एम कभी नहीं हो रही। तो इसका मतलब कैपिटल एम माइनस एफ एक्स कभी भी जीरो नहीं होगा। यू कैन राइट हियर डज नॉट वेनिश, vanish at any point in the closed interval a comma b। क्लियर? तो हमने ये माना कि हमारे पास जो कैपिटल एम है वो अटेन नहीं हो रहा है, तो अटेन नहीं हो रहा है, तो वी हैव एंड क्लियरली वी नो दैट कि दिस एफ एक्स इज ऑलवेज लेस देन कैपिटल एम बिकॉज दिस इज द अपर बाउंड। ओके, तो इट मीन्स दैट दिस एम माइनस एफ एक्स in some positive value, है ना। And this fx is never be equal to capital M for any value from this interval a comma b। ओके, तो हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो लेट्स डिफाइन gx। हमने एक gx डिफाइन करा, और उसको हमने कुछ इस तरीके से डिफाइन करा, वन अपॉन कैपिटल एम माइनस। ये हमने अपनी तरफ से जनरेट करा फंक्शन, ये डिफाइन करा। Because this fx is a continuous function, that m minus fx is a continuous function, and it never be given zero, ये कभी भी जीरो नहीं होता है। This value is always positive, this value will be always positive। तो अगर ये always positive होता है, then 1 upon m minus fx will be a continuous function, will be a continuous function। It means gx will be a continuous function। Okay, you can just write here for all x in this closed interval a comma b। Okay, and you can write here which is positive always, which is positive for all x। Okay, in this a comma, okay, and clearly it will be continuous, and it's continuous, and it is continuous। So so therefore you can say it is bounded by boundedness theorem if the function is continuous and it's positive, then it will be bounded। So in the closed interval a comma b, तो अगर बाउंडेड है तो इसका कोई ना कोई अपर बाउंड होगा। तो इफ आई एम जस्ट टेकिंग, इफ किसका अपर बाउंड, जी एक्स का, इफ कैपिटल जी बी इट्स लीस्ट अपर बाउंड, इट्स लीस्ट अपर बाउंड, then by definition
of upper bound, least upper bound, you can say this is 1 upon capital M minus fx. It always will be less or equal to g. So from here you can say, this is M minus fx will be greater or equal to 1 by g. So if you are writing this is fx only, it will be less or equal to M minus 1 by g. Okay, so this will be less or equal to M minus 1 by g. Or already we have taken this M is the least upper bound. I am saying कि M is the least upper bound, but ये least upper bound नहीं रह जा रहा है, क्योंकि इस अगर हम 1 upon g it's some upper bound, it's 1 upon g some positive number. So because that is the positive value and its upper bound, this is the positive value, then definitely its upper bound will be the positive value. Okay, तो दिस 1 अपॉन जी सम पॉजिटिव वैल्यू, अगर m में से हम सम पॉजिटिव कुछ भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस विल बी लेसर देन m. m माइनस 1 बाई जी विल बी लेस देन m, और m एक लीस्ट अपर बाउंड है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होना चाहिए. तो इट गिव्स द कंट्रडिक्शन. इसका मतलब हमारा जो सपोजिशन है कि m जो है वो अटेन नहीं करेगा, वो गलत है. इट विल बी हैपन. तो you can say it contradicts our assumption that m is in least upper bound. तो हमारे पहले से, तो इसका मतलब कंट्रडिक्शन दे रहा है. तो which contradicts, which contradicts the hypothesis. It contradicts the hypothesis that capital M is the LUB, least upper bound. Okay, clear? So hence you can say here our supposition is wrong. Our supposition that fx does not attain the value m is not correct. So what will be correct? It will be, so it means you can write therefore it will be attained. Therefore the effects must attain. The value m in this interval b comma b. Okay. Similarly, we can also prove the lower limit, है ना? So similarly, so if you are saying here also suppose this fx does not attain small f. Okay, so if it does not attain, so and it is a greatest lower bound, so this implies this fx is always greater than small m. So this implies you can say this is m, then you can say this is fx minus small m will be some positive. Okay, because fx is always greater than m, है ना? Because m is the greatest lower bound. Okay, this is a GL. अब हमें देखना है अटेन, तो हमने अभी माना है कि अटेन नहीं करता है,
अटेन नहीं करता है, इसका मतलब है दिस विल बी ग्रेटर देन जीरो एंड नेवर विल बी जीरो, नेवर बैन, never ban it means is for any x it will be not equal to m. Okay, तो दिस इज पॉजिटिव, तो सिंपली यहाँ पर भी हम एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, और यहाँ पर भी हम जी एक्स या एच एक्स मान लेते हैं, जस्ट टेकिंग एच एक्स, तो एच एक्स इज द फंक्शन लाइक दिस, दिस इज योर एफ एक्स माइनस का। ओके, दिस इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बट इट इज नॉट अटेन्ड, है ना, हम यहाँ पर ये लेके चल रहे हैं, तो ये हमारे पास एक फंक्शन बना एच एक्स विच इज वन अपॉन एफ एक्स माइनस एम। ओके, this is 1 upon fx minus m. Obviously, this is positive, and fx is a continuous, then fx minus m is continuous, then this will be the continuous. Okay, so this will be positive first and continuous. So hx will be bounded. I'm just taking here x is belonging to the closed interval a comma b. Okay, so it is bounded. It means we can so we have a upper and lower bound, whatever we can take. So here we taking the upper bound. So uh, let LUB, you can just say least upper bound of hx be capital H. Okay, it means that this is 1 upon fx minus m is always less or equal to h. So from here you will have just only this will be 1 this is fx minus small m is greater or equal to this is 1 upon h. This is 1 upon h. Okay, so if you are sending this this I mean RHS on right hand side, so this fx will be greater or equal to m plus 1 upon h. Okay, so and because this is m, fx is always greater than m, but this is m plus 1 upon h is something, because 1 upon h is some positive value, then m is some positive value, m is, so you are adding into 1 upon h, so this will be definitely more than h, more than m. This will be definitely more than m. But already we have mentioned that m is the greatest lower bound, so no value more than m will be the lower bound. So this gives a contradiction. Okay, so gives a contradiction. Gives a contradiction. Okay, so our supposition is wrong, not correct. हमने क्या सपोज करा था कि द फंक्शन इज नॉट attaining its minimum value, its lower bound. So this implies this fx must attain the value small m in this interval a comma b. Okay, so this is the proof of the your result. If a function is continuous in the closed interval a comma b, then it definitely attains its bound, lower or upper bound. Okay, so
what will happen when the function is defined on an open interval. So if a function defined on an open interval or continuous in open interval, then it is not necessarily that function will attain its a maximum or minimum value. It means upper or lower bounds. Okay. So you can also add a remark in this class. So what's the remark? So in the above theorem is not always true. You can write theorem is not always true. Just a minute. Mm, so this is not true always. ओके सो इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू तो इसको देखने के लिए एक हम फंक्शन ले लेते हैं है ना इफ अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन द ओपन इंटरवल a comma b then it is not necessarily not always true if just a second. If the function if a function is continuous in the open interval ओके तो एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं हम देखते हैं कि एफेक्ट हमने एफेक्ट को कुछ ऐसे डिफाइन करा है looks like this will be 0 when this is x equal to 0 and it will be 1 minus x when x is lies between 1 and 0 this is open interval and will be 1 when x is equal to ओके तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि here the function is continuous in the closed interval here you can just say here the function is continuous in open interval in open interval 1 comma 0 but its upper bound is 1 and lower bound is 0 is not attained okay okay so this is the results okay this is the proof of the this result extreme value theorem this is known as extreme value theorem so it will be applicable only for a continuous function which is defined in a closed interval if it will be defined in a closed interval it will be definitely attain its bound okay and that this obvious it will be a bounded function okay so meet let's meet in the next lecture for the uniform convergence okay so we will study uniform convergence in the next lecture okay so thank you so much we will meet in the next lecture